Good morning everyone. In the last video we have seen the preparation of the aldehydes by using the Rosenman reaction, Gattermann reaction, Itard reaction, etc. And in this video we are going to see the preparation of ketones. That means the preparation of ketones by those of the reaction which are capable to form the ketones only. They are not capable to form the aldehydes. तो हम देखने जा रहे हैं वो रिएक्शन जिसमें सिर्फ कीटोन बन सकता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन उन रिएक्शन से नहीं हो सकता. एंड वी आर स्टार्टिंग विद द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन. रिएक्शन इज वेल नोन टू यू. क्लास 11th में आपने पढ़ा था व्हाट आर द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन. द सेम रिएक्शन वी आर यूजिंग हियर. दिस इज द बेंजीन. When it is treated with acyl halide ClCOCH3 in presence of Friedel Kraft reagent. Friedel Kraft reagent is AlCl3. Under anhydrous condition, it forms benzene. एक हाइड्रोजन जो यहाँ पे था, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिमूव हो जाता है और ये बन जाता है COCH3 plus HCl. The compound is called acetophenone. So when benzene is treated with acyl halide in presence of AlCl3 anhydrous, which is well known as the Friedel Kraft reagent, it forms the acetophenone. And this is a ketone. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ये रिएजेंट एसिल हैलाइड ही लें, इसकी जगह पे कोई और हैलाइड ले सकते हैं. यहाँ पे आप यहाँ पे COCH3 की जगह पे CO बेंजीन ले सकते हैं, एथिल ले सकते हैं या कुछ और ले सकते हैं और उससे इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं. लेकिन हर एक रिएक्शन में जो कंपाउंड बनेगा वो कीटोन ही रहेगा. वन मोर थिंग, व्हाई वी टेक द एनहाइड्रस AlCl3, व्हाई नॉट द जनरल AlCl3 और द हाइड्रस AlCl3? When it will be anhydrous, the AlCl3, which is an electron deficient species, that will act like a Lewis acid. अगर किसी भी सिस्टम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्रायर स्पीसीज माना जाता है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग स्पीसीज माना जाता है. एंड दोज आर द सिस्टम्स व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड द लेविस एसिड. सो AlCl3 अंडर एनहाइड्रस कंडीशन इज अ लेविस एसिड, एंड बीइंग अ लेविस एसिड इट इज कैपेबल टू जनरेट द electrophile. For example, if this is the AlCl3 reacting with CH3COCl, the incomplete octet of the aluminium will obtain the Cl minus from here and will prepare AlCl4 negative along with CH3CO positive. And this CH3CO positive is an electrophile which will approach on the benzene and proceed the reaction. You know well that Friedel Kraft reaction or the Friedel Kraft acylation reaction is one of the example of the electrophilic substitution reaction in the benzene. So this is also a electrophilic substitution reaction, and here the electrophile CH3CO positive is generated due to the presence of the anhydrous AlCl3. So simply you can say that AlCl3 under anhydrous condition is used for the generation of the electrophile. It is a electrophile generator, and this is the reaction that is called the Friedel Kraft acylation reaction. This is the mechanism for the generation of electrophile, and this is the major reaction. The product which is formed is a acetophenone. You can note it down. Now we are seeing the next reaction, that is the preparation of ketone by using the Grignard reagent. अब यहाँ पे Grignard reagent के यूज करके एल्डिहाइड एंड कीटोन किससे रिएक्ट करके बनाएगा कीटोन या ये कार्बोनिल कंपाउंड? देन इट इज द नाइट्राइल, साइनाइड या फिर नाइट्राइल, जो भी कहें. इस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सो व्हेन नाइट्राइल इज ट्रीटेड विद द alkyl magnesium halide or the aryl magnesium halide, which is well known as Grignard reagent, it will form, after hydrolysis it will form the ketone. So this is the example. This is CH3C triple bond N. That is the ethyl nitrile or the methyl cyanide. When it is treated with a Grignard reagent CH3MgBr. So in organic compound, the magnesium alkyl bond will break, methyl magnesium bond will break, and when it will break, where it will be the positive charge? Surely it will be on the magnesium region. You know well that magnesium is a well known metal.
and being a well-known metal, the magnesium will attain a positive charge. So on breaking these of the bonds, that is the carbon nitrogen bond, one bond will break in this way, and because of the breaking of bond, the nitrogen will attain a negative charge, and on this negative charge the MgVr will approach, and the methyl, which is containing of negative charge, will approach on positively charged carbon. So here is the methyl group, CH3. So when you will hydrolyze this one, H2O H plus under acidic medium, it will form CH3, C, यहाँ से break करेंगे, बन गया double bond O and CH3, along with magnesium hydroxyl bromide and ammonia. So this is the ketone. Here it is acetone which is formed. The compound is ethane nitrile. This is the methyl magnesium bromide, जिसे कहते हैं हम Grignard reagent, and this one is acetone. In IUPAC name, it is the propenone or propanone. Generally, it is called the acetone. This is the magnesium hydroxyl bromide, and this is the ammonia. So these were the sum of the reactions which are used for the preparation of ketones only. यानी ये reaction aldehyde के preparation के लिए use नहीं किए जा सकते हैं. They can be prepared only for the preparation of ketones. Now we are going to see the next topic, and that is the physical property of the aldehydes and ketones. So when you will talk about the physical property, what are the physical property? Whatever the property any system is capable to exhibit physically, that is called the physical property. For example, the color, the smell of the compound, the appearance, solid, liquid or gas, the boiling, melting point, etc. That is called the physical property. So we are going to discuss about the physical property of the aldehydes as well as the ketones. So when we talk about the physical property, we talk about these are the four topics. That is the color, odor, boiling point and melting point, and the last one, that is the solubility. And we are starting with the color. What will be the color of the aldehyde and ketone? Then before starting about the discussion about the color, that what is the color of the aldehyde and ketone, we will discuss that why the system is capable to show the color. Actually, when we talk about the color, we talk about the color of light, and light have total 7 colors: Grignard, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. And the combination of these of the 7 colors is called the white, and absence of light is called the dark, that is the black. Now when light strikes on any of the surface, assume it is striking on this green board or striking on my black shirt, then what happens? Some of the electrons of this system get excited. जब इस पे लाइट स्ट्राइक करती है तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, and due to the excitation of electron or specific frequency of light is absorbed. विबग्योर में से एक या दो या तीन फ्रीक्वेंसी या हो सकता है सातों फ्रीक्वेंसी उस एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में कंज्यूम हो जाती हैं. अब ऐसा होने से सारे के सारे कलर वापस नहीं आ रहे हैं. द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज ऑफ द 7 कलर इज व्हाइट, लेकिन अगर उसमें से 2-4 कलर मिसिंग है, तो अगर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कुछ एक कलर तो एक्साइटेशन में कंज्यूम हो गए, और ऐसा होने से सारे कलर वापस नहीं आ रहे हैं. तो जो भी कलर आ रहे हैं उनका जो भी कॉम्बिनेशन होगा, उनके कॉम्बिनेशन से जो भी कलर बन रहा है, दैट इज द कलर ऑफ द कंपाउंड. नाउ कम ऑन द टॉपिक ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. देन व्हाई द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव colorless nature? First of all, you need to know that all the aldehyde and ketones are colorless. Then why they are the colorless by the nature? When you will see the nature of the carbon, hydrogen and oxygen, we are starting with carbon. The valence shell of carbon is the second cell, and second cell contains only 2 subcells, that is the S subcell and P subcell. The S subcell have the capacity to contain maximum of 2 electrons, and P subcell have capacity to contain total 6 electron. That means कार्बन का वैलेंस सेल 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं कर सकता.
And we know well, in the case of aldehyde and ketone, all the carbons have the tetravalency. सारे के सारे कार्बन टेट्रावैलेंसी बना के बैठे हुए हैं, यानी 4 बॉन्ड्स हैं. 4 बॉन्ड के लिए 4 बॉन्ड पेयर चाहिए, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. That means the carbon have already complete octet. And same in the case of oxygen, which have again only S and P subshell in their valence cell, second cell, and again that is making 2 bonds having already 6 electron in their valence cell. So कार्बन और ऑक्सीजन के पास डी सबसेल के एब्सेंस की वजह से कोई प्लेस ही नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो सके. एंड इफ यू विल टॉक अबाउट द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैव ओनली एस सबसेल, हाइड्रोजन डज नॉट हैव इवन पी सबसेल. तो वहां पे 2 ही इलेक्ट्रॉन से उसका ड्यूप्लेट भर जाता है, तो वहां पर भी एक्साइटेशन नहीं हो सकता. एंड ड्यू टू द लैक ऑफ एक्साइटेशन, these of the compound, that is aldehyde and ketones, are not capable to exhibit any color or not capable to excite their electrons, so they are not capable to show any color. Now the next one, that is the smell, odor, that is pleasant. Actually chemistry में प्लीजेंसी और अनप्लीजेंसी के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता. रीजन आप जानते हैं कि जो स्मेल एक आदमी को प्लीजेंट लग रहा है, हो सकता है दूसरे को भी प्लीजेंट ना लगे. ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किन कंडीशंस में है, आपकी बॉडी को क्या चीजें ठीक है आपकी बॉडी के लिए और क्या चीजें ठीक नहीं है. जो भी चीजें हमारी बॉडी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती उनकी स्मेल अच्छी नहीं आती, और जो चीजें अच्छी होती हैं वो हमारे बॉडी के लिए अच्छी स्मेल प्रोवाइड करते हैं. सो हम इसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करने जा रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. एंड द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज आर द कंपाउंड्स आर हाई ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इवन जब क्लास 11th में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस समय मैंने आपको कहा था द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल व्हेन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड ऑन ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ऑन द नाइट्रोजन. एंड इन द केस ऑफ कीटोन, इफ आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये एसीटोन है. यू कैन सी नो एनी हाइड्रोजन इज अटैच्ड डायरेक्टली ऑन द ऑक्सीजन. That means it is not capable to form the hydrogen bonding. लेकिन मैंने तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख रखा है, और ऐसा इसलिए लिख रखा है because all the aldehyde and ketones are known for their keto-enol tautomerism. That means this compound will turn in the form of CH2 double bond COH CH3, and their interconversion is called keto-enol tautomerism. This one is ketone, keto. This one is double bond ene and alcohol, all. Keto-enol. Interconversion is called the tautomerism. Then because of the keto-enol tautomerism, when it is in the form of enol, it have hydrogen on the oxygen. That means it is capable to form the hydrogen bonding. And because of this hydrogen bonding, the system have higher boiling and melting point. अब higher का मतलब कितना higher? Higher than all the other organic compounds other than एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. यानी कि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता है. नाउ द लास्ट वन, दैट इज द सॉल्युबिलिटी, एंड दे आर सॉल्युबल विथ वाटर. व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी विथ वाटर, बिकॉज ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल विद द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम नेचर. We are talking about the solubility with water, and why any organic compound will dissolve with water? Surely the organic compounds are not going to form any ionic species. They are not going to dissociate in the form of ions. But when you will talk about the solubility, the another factor is the hydrogen bonding. And we have already discussed, due to the keto-enol tautomerism, these are the compounds have capacity to form the hydrogen bonding in their enol form. And because of that, these are the compounds, that is the aldehyde and ketones, are soluble with water, sufficiently soluble in water. So this is the physical property of the aldehyde and ketones. And here it is, colorless compound having pleasant smell. So for some of the people you can say that is not pleasant, but maximum pleasant smell. The next one, boiling and melting point, that's high, and that high due to the hydrogen bonding. And the last one, that is the solubility, it is soluble with water, and again due to the same reason, due to the hydrogen bonding. And that hydrogen bonding comes from the enol form, because all the aldehyde and ketones have the tendency to survive in the form of the
ketoenol tautomers. That means the ketone is regularly converting in the form of enol, and enol is regularly converting in the form of the ketone, and that is called the ketoenol tautomerism. In this video, only this much. In the next video, we will discuss about the chemical property of the aldehyde and ketone, and we will start with the nucleophilic addition reaction of the aldehyde and ketone. Till then, thank you and have a nice day.